Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Me Tutorials. In my previous video, we have discussed the course outline of the course. In today's video, we are gonna properly start our course. Those who have seen my last video knows that this course called Basic Mathematics include 12 topics and each topic has some subtopics. The very first topic which we have today is whole numbers, and the subtopic which we are going to cover today is concept of whole numbers. So let's start with what are whole numbers. Whole numbers are basically simple numbers that start with 0, like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and goes on. You must be thinking that if they are simple numbers, then why we called it whole numbers? There are two reasons behind it. The very first reason is in our when we talk about simple numbers, we don't include 0 regularly. Simple numbers, we don't start our counting with 0, and the other fact we called it whole numbers because in simple numbers we count negative numbers also, fractional numbers, and decimal numbers also. But in whole numbers we don't count such number as a whole number. Like this, take a simple example of whole number. We have 5, 4, and let's take 74. Another number we have 3.8, 0.1, and 1/4, 45 कर लेते हैं इसको. So as I told you guys that whole numbers are just simple numbers. They doesn't possess any fractional, decimal, or negative sign. So if we take 5 is a whole number because it doesn't have any decimal, fractionals, or negative sign with it. And 4 is also a whole number. 74 is also a whole number because ना यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ना ही फ्रैक्शनल साइन है, ना ही कोई डेसिमल साइन है. But if we see 3.8, then we can see that this number have a decimal sign, which means that this is a number, this is still a number, but it is not a whole number. This is the difference between whole numbers and simple numbers. We call it number, we call it simple numbers, or in our daily basis a number. It is a number, but it is not a whole number. Now if we see 0.1, we can see that this number also have a decimal sign. So we can see that we call it a number, but it is not a whole number. Here also another number which we have, 1/45. This is also a number but not a whole number because it has a fractional sign in it. Let me tell you a trick so you can remember कि हमारे पास whole number हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. तो अगर हम यहाँ पर एक सेकेंड ये लेट्स सी, हम whole numbers के अंदर ही एक स्पेलिंग देखें which is whole. Whole means सुराख, and whole दिखता कैसे, let me यहाँ पर whole कैसे होता है, ज़ीरो गोल होता है, और जो हमारा ज़ीरो होता है वो भी गोल ही होता है ऑब्वियसली. तो ये दोनों
सिमिलर हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि हमारे होल नंबर्स में ज़ीरो आता है। एक अपना ही अंदाज से एक ये ज़ीरो यहाँ पर शो हो रहा है, विच मीन्स कि जो हमारे होल नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं ज़ीरो से। थोड़ी सी और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, थोड़े से बड़े नंबर्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अ लार्ज नंबर 45,500 45,500 3,26,796. Okay, and 0.01 2, इसको ऊपर कर लेते हैं, 2 4। अब हम इन्हीं 3 नंबर्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव a large number here which is 45,500. It doesn't have any negative sign, it doesn't have any fractional sign like ratio या upon वाली sign, ये ratio की sign है, and it doesn't have any decimal in it, which means it has only simple numbers which is 4 5 5 0 0. तो it means कि ये एक whole number है. Let's see this number 3,26,796. It doesn't have any decimal sign, it doesn't have any negative sign, and it doesn't have also any other fractional sign, which means that it is also a whole number. Now let's see here, this number has 0 in it and other simple numbers. It doesn't have any negative or any other fractional sign, but this number have decimal sign, which shows that this is a number but it is not a whole number. तो अगर हम whole numbers की definition एक तरह से देखना चाहें तो वो हो सकती है, it is whole numbers are basically only integers like this, यहाँ लिखा हुआ है integers without any fraction sign which start with 0. तो यहाँ हमारे पास होल नंबर्स की दो, हम इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, वी कैन सी दैट होल नंबर्स की जो पहचान है कि क्या ये होल नंबर है या नहीं, उसके दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं. एक ये कि अगर ये होल नंबर्स की आपको लिस्ट मिल रही है विच इफ़ दैट लिस्ट स्टार्ट विद 0, इट मीन्स कि ये होल नंबर्स हैं. एंड इफ़ दैट लिस्ट और इफ़ दैट नंबर्स डजंट हैव एनी फ्रैक्शनल साइन, इट मीन्स कि ये वो भी होल नंबर्स हैं. अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे लेकिन उन पे कोई फ्रैक्शनल साइन नहीं है, इट मीन्स कि वो भी होल नंबर्स हैं. दैट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स. तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि होल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं और डिफरेंस बिटवीन क्या होता है सिंपल नंबर्स में और होल नंबर्स में. थैंक यू.